I'm your host, Sreem bin Mohammed Rafi, and here is your YouTube channel. I am just going to say today, which all I think is all over now, the whole world knows, that the one mischief, how that one mischief has been stubborn, defied, and insulted the every international rule or any international society or any court, and the main aim of this gentleman has been to destroy peace in the world. Where will he go? Probably in the deepest pits of hell and will never ever have a normal death. He will be killed, and probably his family and he and all his followers will regret it, that he had a numerous chance for peace. But single-handedly, both in settlements, both in being stubborn and the babies he killed, and the women and elderly, the cancer patients, and the way he destroyed hospitals, universities, colleges, and schools, is Netanyahu. And now, when you can see how he has dragged Iran, which like a puppy, which you have a leash on that puppy dog, and you pull him into the one. This was his lifetime dream, to have the United States one-on-one fight Iran. And hopefully he will not succeed, but he will be responsible for the suffering of the whole population of Israel. So look at the all effort of the Zionists for the last 1 century. People have been really hating this group of people, and no other nation's graves are dug and they are spitted upon. They incinerators, gas chambers, nothing can do about it. And there are few clips I will show you what is there, the way they think about it, and the way they like and justify raping the innocent and the people who they have detained, and they are helpless. They tie them up, have them naked, and one by one they go and rape them. And one of the child, which they are not showing, and the IDF soldiers who are closing the door back again and again, was probably 10 or 12 years old. I couldn't make the sex of that, was a boy or a girl, and was, as soon as he saw the face of these pigs and swines, the child started to cry. Now, if they can do this thing, and on the contrast, I am going to put the hostages released by Hamas from the prison, and they gave them the same thing to eat what they ate themselves, and they said that we believe on the Holy Quran. So that shows you the contrast between the Hamas, to whom they call terrorists, and these beasts. And look at the clergyman. They says that the Christians must worship, and they will worship. That's what he believes, the Jews. Now imagine with that kind of a mindset, how do you think that there can ever be a peace unless these people are expelled from the United Nations and they are finished forever and ever? I mean, we have one party, it's the corporate party, and you get to choose between the more staid and controlled figure of an Obama or a Biden or a Harris, or you get the cult leader, demagogue, proto-fascist Trump. Now, the capitalist class would prefer the more measured and somber tones of the Democrats, but they can live with Trump. Chris Hedges is a Pulitzer Prize-winning American journalist who was a foreign correspondent for nearly 2 decades at the New York Times, where he was appointed as the paper's Middle East bureau chief and later their Balkan bureau chief. He's also the author of several bestsellers, including Death of the Liberal Class and American Fascists, The Christian Right and the War in America. He currently hosts the Chris Hedges Report on YouTube, and you can find him at chrishedges.substack.com. And he joins us now from New Jersey. Chris Hedges, thank you so much for taking the time to speak to us on Real Talk. Not at all, Mohammed. I want to ask you, how have you been interpreting the last few weeks? We've seen the Trump-Biden debate, the fallout that Biden had from it, the assassination attempt on Trump, and then the shifting sentiment towards Kamala Harris right now. How do you see this moment in American history? Well, it's the throes of a dying empire and a dysfunctional system. I don't think there's much shifting sentiment to Harris.
other than among the billionaire class that stopped funding Biden because he's incapacitated. He clearly has severe cognitive issues. The internal polling within the Democratic Party showed a rout, not only for Biden as the presidential candidate, but for members of Congress as well. And the pressure, because we live in a system of legalized bribery where it is that corporate billionaire class that determines who runs. And let's be clear, Biden has worked for these people for 47 years. They used to call him Senator Credit Card, and he was behind every disastrous neoliberal policy, whether revoking Glass-Steagall, that was the firewall that protected commercial and investment banks and led to the global financial crash, or whether it was he was calling for an invasion of Iraq 5 years before we invaded Iraq. He was behind NAFTA. He was behind these tough on crime bills that doubled our prison population. We have 25% of the world's prison population. We're less than 5% of the world's population. Militarizing our police, the Patriot Act. I mean, the list goes on and on and on. So he was a creature of this system. He served this system, and the system essentially threw him overboard when he became incapacitated, or he had obviously been incapacitated for some while, but they had kept it hidden from the public. No news conferences. He just read from teleprompters, although even then he stumbled and would sometimes read the directions like turn right, this kind of stuff. So yeah, that's what we're seeing. Nobody voted for Harris. Nobody really voted for Biden. Remember, in the primaries, the Democratic Party essentially blocked any rival candidates from running. There were no debates in the primaries. Biden, if you go back to the 2020 election, Bernie Sanders was clearly on his way to the nomination, and the Democratic hierarchy intervened to get the other candidates to drop out and use Biden as a foil to Sanders. He had done very poorly in the initial primaries. So this is, we have to understand the engine of power. The machine itself remains untouched. I find it staggering. The Democratic voters have absolutely no say, have had no say in who their presidential candidate is. They're little more than stage props. And that has been true in the past, but now, of course, it's in extremis. So that's on the one side. On the other side, we see a disenfranchised, largely white working class. 30 million Americans have lost their jobs since 1996. That's when record keeping started, in mass layoffs. That is the fundamental problem. The election of Trump had nothing to do with Russia or anything else. It had to do with this deep despair and even rage among people who have been betrayed largely by the Democratic Party, because it was the Clinton administration, and Biden was a key ally, that pushed through NAFTA, this trade deal that deindustrialized the country. It was probably the greatest betrayal of the working class since the 1947 Taft-Hartley Act, which makes it very, very difficult to organize strikes outside of your workplace, sympathy strikes. I mean, essentially crippled the labor movement in the United States. So that's what we're seeing. And meanwhile, we leap from one catastrophic military fiasco to the next. And you know the list as well as I do. Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, Ukraine, Gaza, and of course, the only people who profit, quite literally, is the arms industry. I mean, most of this money goes directly to the arms industry. So it is a dysfunctional system. If you've been to the United States, our cities are in decay, our rail service doesn't work, our roads are a wreck, the electrical grids are going out. And that's what happens with empires in decay. They eat their urban centers first. And then the political machinations that we see are really a symptom of that decay. Trump is not the disease, he's the symptom. He's a classic demagogue who rises up out of profound despair among huge sectors of the population who engage in magical thinking. But this sector of the population, the Christian right, for instance, engaged in magical thinking and
fact-free visions of science and history and everything else long before Trump. So Trump really built on a malaise that was already widely prevalent within the United States. But that globally is where I see where we are. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजराइल की हालत इस वक्त क्या हो चुकी है, ये आप मनाजिर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त यानी 7 से 8 दिन का इनको कहा गया था कि आपने राशन इकट्ठा करना, घर से बाहर नहीं निकलना। अब 7-8 दिन में तो ईरान ने और किसी ने हमला नहीं किया, अब राशन तो सारा वो खा गए। अब वो सुपरमार्केट की तरफ जिस तरह दौड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ पर, और हालत ये हो चुकी है कि लपक रहे हैं सुपरमार्केट्स में सामान इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जो खबर आई है उसके बाद तो जाहिर सी बात है हर इजरायली के साथ यही सूरत हाल होगी और वो परेशान तो होगा। खबर जो आई है उसके बाद ये सूरत हाल है, और खबर ये आई है कि शाम के अंदर जो आर्मी चीफ है, मिलिट्री चीफ है, उसने ईरान को अलाउ कर दिया है कि आपने इजराइल पर हमला करना है, आप एक काम कीजिए, मिसाइल यहाँ पर ले आए या ड्रोन है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इनके हथियार और चीजें सब कुछ है, तो आप यहां से बैठकर हमला कर लें। यहां से आप हमला करेंगे तो ना तो आपको जॉर्डन की तरफ जाना पड़ेगा, ना आपको इराकी एयर स्पेस के ऊपर से आना पड़ेगा, सीधा यहां बैठे और सीधा मारे मिसाइल। अब इस सूरत हाल में आप वहां पर मिसाइल मारेंगे, आप वहां पर ड्रोन्स मारेंगे, चीजें मारेंगे, तो इसराइल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि इसराइल ने आज जो ऐलान कर दिया है, अमेरिका ने असल में ये बात अब बता दी है, जो इसराइल ने सीक्रेटली उनको बताई। वो कह रहे हैं कि हमें खतरा ये है कि ईरान, लिबनान और इन सब के हमले में हमारे डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ ने यानी जो नसरुल्लाह है, उन्होंने कहा है कि हमने आयरन डोम को इतना तबाह किया है, अब जब हमला करेंगे तो आप देखेंगे हम इनके आयरन डोम के साथ करते क्या, ये इनके पास खत्म हो जाएंगी सारी चीजें और ये बाकी भी नहीं रहेगा। अब ये जो सूरत हाल हो तो उसमें तो तबाही तो होगी, और उसके बाद जो उससे भी बड़ी डेवलपमेंट है कि इस वक्त प्लान ये चल रहा है, ये जो आपकी स्क्रीन पर लोग आ रहे हैं, ये असल में तमाम के तमाम जो लोग हैं, ये रीजनल काउंसिल के हेड्स हैं, उनकी मीटिंग हुई है और वो कह रहे हैं कि इजराइलियों को निकाल कर टेंटों में लेकर आना है। ये एक मकाफाते अमल है। तो ये सारी डेवलपमेंट समझ लें कि मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले इस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा, टाइम मैगजीन की तस्वीर है, इसमें नेतन्याहू की तस्वीर है, पीछे ब्लैक एंड व्हाइट और धुआं सा उठता है, इसका बीबी एट वॉर, यानी आपको पता है नेतन्याहू को बेंजामिन नेतन्याहू और इसको निकनेम बीबी है। तो ये जो इंडिकेट किया है ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, ये बता रहा है कि दुनिया की खतरनाक तरीन जंग होने वाली, धुआं उठेगा, तबाही होगी और उसके बाद पूरे का पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में आ जाएगा। ये बैकग्राउंड में जो ब्लैक कलर का इन्होंने पूरी की पूरी रखा हुआ है, ये असल में सोग की निशानी, यानी बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। तो आपको पता है मैगजीन और ये चीजें तमाम बताते हैं। अब आप जरा हाल देखिए कि इजराइल के अंदर क्या हो रहा है। ये लोग इस वक्त भाग रहे हैं, तेजी के साथ भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक तो सप्लाई नहीं आ पा रही जिस तरह आनी चाहिए थी, दूसरा वहां पर मार्केट्स में शॉर्टेज हो चुकी है चीजों की। तो लोगों ने अपने घर के अंदर जो सामान और ये तमाम चीजें हैं वो इकट्ठा करना शुरू कर दी हैं, और इस तरह इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं कि वो पहले उनको खतरा ये था कि 7 दिन तक या 4 दिन तक ये सारा कुछ होगा, अब वो तेजी से भाग रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं वहां पर, और हालत ये हो चुकी है कि किसी को पता नहीं है कि क्या मामला होगा। वहां पर जाकर स्टोर्स के स्टोर्स खाली हो रहे हैं, यानी ये खौफ में जो बाइंग हो रही है, खरीदारी हो रही है, जितना उनके पास पैसा चीजें हैं वो सारा कुछ खरीद कर ला रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कितनी गुंजाइश रखते हैं, वो हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि आप हमें बताएं कब हमला होगा। उनको कुछ नहीं पता कि हमला कब होना है, क्या नहीं होना। उन्होंने तो इवन के कतर को कहा है कि आप बैठे मुज़ाकरात करें, हमारे साथ कोई डील फाइनलाइज करवा दें, हमारे लोग पागल हो गए। और आप देखिए ज़रा, यानी इस कपल को देखिए, ये लड़की और लड़का ख़ास तौर पर जब रॉकेट और चीज़ें आती हैं तो खौफ से क्या लेवल होता है उनका कि वो जहाँ पर होते हैं गाड़ियों से उनको उतरना होता है और अपने कानों पर वो हाथ रखते हैं कि हमें नहीं पता रॉकेट कहाँ आ जाएंगे क्या, क्योंकि किसी जगह पर तो शेल्टर मौजूद होते हैं, किसी जगह पर नहीं होते, तो किसी को नहीं पता। तो उनको कहा ही जाता है कि आपने बाहर निकलना है। अब आप इमेजिन करें कि अगर आप बाहर निकले और ऊपर से रॉकेट और चीज़ें आ जाए तो क्या हाल होगा। ये खौफ में जो इस वक्त ये लोग जी रहे हैं, आप उसका और हम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप किसी को मार दें वो एक अलग चीज़ है,
लेकिन जो खौफ इन्होंने फैलाया हुआ है कि जी कल हमला हो जाएगा, परसों हो जाएगा, रोज वो कहते हैं। आज उन्होंने कहा था कि जुमे की नमाज पढ़ के होगा, लेकिन उन्होंने अभी हमला नहीं किया। वो इनको मुकम्मल तौर पर नफसियाती तौर पर बीमार करें, पूरे का पूरा इनका ऑपरेशन रुका हुआ है। क्योंकि अब जो डेवलपमेंट आई है वो ये है कि जो शाम का सिक्योरिटी चीफ है यानी आर्मी चीफ है, उन्होंने ईरान को ओपनली कह दिया है कि आप हमारी सरजमीन पर आ जाएं, यहाँ से आप हमला करें, इजराइल पर मिसाइल मारे, ड्रोन्स मारे, जो करना है आप करें, आपको भरपूर आज़ादी है। जब ये खबर आई इजरायली मीडिया पर तो जाहिर सी बात है सबसे पहले प्रॉब्लम ये हुई कि इसराइल के अंदर खौफ मचा, इसीलिए तो लोग भागे। अब ईरान के और यानी समझ लें कि रूस के भरपूर बड़े अंदाज में उनके इस वक्त कार्गो पहुंचे हुए हैं और वो रूस की मिलिट्री बेस पर शाम में पहुंचे हैं। वहां पर धड़ाधड़ मिसाइलों के साथ साथ वेपन्स, न जाने वहां पर ड्रोन्स और क्या क्या चीजें वहां पर पहुंचाई जा रही है। किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, क्या मामला होने वाला है, लेकिन इन सबको इतना पता है कि तबाही हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। अब ये सूरत हाल है कि वहां से गालिबन ही हमला करेंगे। जितनी अभी तक इंटेलिजेंस मालूमात थी अमेरिका और इसराइल के, यूरोप की, वो सारी की सारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर फेल हुई है। अमेरिका ने पीर से लेकर अब तक का जितने हमले, जो तमाम चीज़ें की थी, वो टोटली सारी अब तक फेल हुई हैं। लिहाजा उनको नहीं पता ये शाम से जो हमला करना है, शाम से अगर हमला होता है तो आप ये समझ लीजिए कि शाम के अंदर बैठा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा किंग यानी रूस बैठा हुआ है, S-400 ऑलरेडी वहां पर लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा इजी चीज़ होगी। अब शाम जाहिर सी बात है, इन्होंने वार्निंग जारी की शाम के अंदर ये काम करेंगे तो वहाँ पर मलेशिया से, आपको पता है कि अमेरिका की जो ख़ास तौर पर वहाँ पर मिलिट्री बेस थी, जो ऑयल फील्ड थी, वहाँ पर जो उन्होंने कब्जा किया हुआ था, वहाँ पर पिछले कई दिनों से हमला हुआ है और कई इलाके उनके हाथ से चले गए हैं, यानी उन्होंने उन इलाकों को वापस ले लिया। ये पहली दफ़ा हुआ है। तो अमेरिका के तो पैरों तले ज़मीन निकली है कि यार ये क्या हुआ है, तो वहाँ पर भी सूट करता है इनको। अभी तक ये भी नहीं पता कि ईरान ने यहाँ से भी गालिबन हमला करना है, लेबनान भी हमला करेगा। लेबनान के हवाले से इन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंटली हमला करेंगे। अब आप ये सोचें कि लेबनान के हमले के बाद सूरत हाल ये है कि क्या हो जाएगी तबाही, उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग बड़ी अहम थी। ये असल में रीजनल काउंसिल जो उनके हेड होते हैं उन्होंने मीटिंग की, ये उनकी जो कम्युनिटीज़ के जो हेड होते हैं उनकी मीटिंग थी। और मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा है कि हम इजराइलियों को टेंटों में रखेंगे, गुंजाइश नहीं है हमारे पास कि हम मुख्तलिफ जगहों पर रख सकें, क्योंकि लाखों की तादाद में आप इनको एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाएं मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि हम ख़ास जगहों पर टेंट रखेंगे, उन टेंटों में इनको रखेंगे, उनको सहूलियत देंगे, उनको गवर्नमेंट चलाएगी, वहाँ पर सिक्योरिटी भी होगी, तैनाती होगी। वो कह रहे हैं कि हमारा दिमाग ख़राब है, गर्मी है इतनी, आप से राह के अंदर हमें जाकर यानी रखना चाह रहे हो, क्या नहीं, हम आपको AC पोर्टेबल ये वो हर फैसिलिटी देंगे। और उन्होंने पूछा आगे इस बात की क्या गारंटी है कि ऊपर से रॉकेट हम पर आकर नहीं गिरेगा। अब इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। यानी आप ये सोचें कि इसको मकाफात अमल कहते हैं कि इन्होंने दूसरों को रखा टेंटों में, अब खुद उनको टेंटों में रहने की बारी आ गई है, तो उनके पैरों तले तो ज़मीन निकलनी है कि इसका मतलब है कि मामला ख़राब है। अब वो कह रहे हैं कि जी अगर कम्युनिटी के हेड को बुलाया कि आप सारे बताएं अब कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा जी ये चीज़ें चाहिए, हम अपने लोगों को समझाएंगे कि वक्त कुछ बुरा। तो वो कह रहे हैं आप टाइम दे दें, कितनी देर तक ये जंग ये सब कुछ ख़त्म होगा। तो आगे से उन्होंने कहा जी ये अब आप इसको अनलिमिटेड टाइम समझें, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है कतर को इन सबको कि आप इससे डील करवाएं, बाकी हम कैदियों का तबादला और ये वो वही ड्रामा जो इन्होंने पहले किया हुआ था। उधर से याह्या सिनवार ने कह दिया है, यानी इजराइल ने कहा है कि उन्होंने पैगाम ये दिया है कि हमास का जो नया चीफ आया है उसने कहा है कि मिस्रियों को उसने बात ये कही है कि अब डील कोई एक्सेप्ट नहीं होगी, बस आखिरी एक चीज़ है, तमाम इजरायली फौजें निकाल दें, वरना याद रखिएगा उससे पहले बस हम रहें या ना रहें, अब हम पूरी लड़ाई करके उठेंगे और इसके अलावा इजराइल की कोई शर्त काबिल कबूल नहीं है हमारा। उन्होंने चीफ मार दिया है, सो लिहाजा अब ये लड़ाई जो है वो आखिरी दिन तक जाएगी। और उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि कतर, मिस्र और अमेरिका के लीडर्स को कोई टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी लड़ाई अब रहेगी और हमने अब छोड़ना नहीं है। सो अब सूरत हाल ये जो पैदा हो रही है वो जाहिर सी बात है इजराइल के लिए मसला है कि रिज्यूम
टॉक्स भी नहीं हो पा रही और लड़ाई होगी, और उसके बाद जो अब लड़ाई होने वाली है वो इतनी खतरनाक होगी कि अब टेंटों में इनको रहना पड़ेगा, और टेंटों में रहने के बाद बहुत ज़्यादा मामला हद तक इतने ख़राब हो जाएंगे कि अब ये लड़ाई अगले पैमाने पर जाने वाली है। यानी अब रीजन से निकल कर ये लड़ाई पूरी जगह इलाके में फैलेगी। सबसे ज़्यादा अभी तक जो मसला इनको चल रहा है वो ये है कि इजराइल का इस वक्त जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर यानी इस वक्त कोलैप्स हो रहा है। उसकी वजह ये है खून की ज़रूरत पड़ेगी, डीजल की ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, जनरेटर्स उन्होंने चलाने हैं। हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त उनका मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो रही है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास इतना नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड कोई स्टॉक्स रख लें, क्योंकि आप ये देखिए लेबनान ने ये कहा है कि अभी हम नहीं बताएंगे कि हम कल हमला करेंगे, परसों करेंगे, चौथ करेंगे, एक महीने बाद करेंगे, हम करेंगे ज़रूर। इस सारे सिनेरियो में उनको ये लगता है कि अवाम इजराइल की अपनी गवर्नमेंट के वैसे ही खिलाफ हो जाए कि आपने हमें कहाँ पर लटकाया, बिना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो आप इस सारी सूरत हाल में हमें बताएं कि हमारे साथ होने क्या वाला है, हमारा क्या मुस्तकबिल है। फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, मुल्क से बाहर हम नहीं जा सकते, फ्यूचर हमारा कुछ समझ नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट भाग रही है। जाहिर सी बात है जिस मुल्क के अंदर आपको पता हो कि 3-4 हज़ार रॉकेट पर डे के हिसाब से आने वाले, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट में क्या खाक आना है। तो इस वक्त इजराइल की जो सूरत हाल है काफ़ी ख़राब है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर